welcome to Herald TV News Bulletin with me, Charlene. The entire span of the new Zwara Bridge could be open for motorists between Verna and Bambolim by November. Deogonda Patel, Deputy Project Manager of Dilip Buildcon Limited, disclosed to media on Thursday. The second last segment is being hoisted Thursday and the closure segment will be added on 30th August, which will join both ends of the bridge. It will take another 2 months for crash barrier and load testing, and then the bridge will be thrown open to traffic, including heavy vehicles, he said. The 14-kilometer Bamboli-Verna stretch will be thrown open to vehicles by November 2022. The Zwara Bridge has a Chinese consultant and a French designer. The closure segment of Zwara Bridge will be added on 30th August, which will join both ends of the bridge. केबल स्टे मेन पार्ट का जो कि अभी हम सेकंड लास्ट सेगमेंट आज लिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन हो रहा है। एंड सेकंड जो क्लोजर सेगमेंट है जो कि हम इस मंथ एंड ऑफ 30th को हमारा प्लान है कि हम क्लोजर सेगमेंट उठा लें, तो उससे क्लोज ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस कि जो माइनर वर्क्स है, क्रैश बैरियर एंड रेलिंग्स और बाकी जो बीसी वर्क है, अदर पोस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बैठाना है, ये इसके लिए हमको और मोर 2 मंथ और लगेंगे। तो समवेयर बाय नवंबर, सो टिल नवंबर इट इज़ ओपन फॉर ट्रैफिक। नवंबर तक पूरा ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा बाम्बोलिम से वेरना तक। यस, ये बाम्बोलिम से लेके वेरना तक टोटल 14 किलोमीटर का स्ट्रेच। और ऑलरेडी हमने पैकेज 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, एलिवेटेड स्ट्रक्चर पैकेज 3 भी कंप्लीट है। ओनली दिस पोर्शन अगर जॉइंट हो जाएगा केबल एक पार्ट का, सो 14 किलोमीटर ओपन फॉर ट्रैफिक। चाइनीज़ कंसल्टेंट अभी भी है कि आप देख रहे हैं जो केबल्स है, जो केबल्स प्रोवाइड किया है हमको पूरा चाइनीज़ ने। एज अ इंडियन पार्टनर है गोआन एंड चाइनीज़ पार्टनर है ओवियम। तो ये दोनों हमारा जो केबल स्टेसिंग करने का काम जो है ये दोनों मिलके कर रहे हैं। उसमें चाइनीज़ कंसल्टेंट आके उसका जो एक्सपीरियंस है हम यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंच डिज़ाइनर एज इट इज़ है, जो कंसल्टेंट है जो कि हमने पहले हम चाइनीज़ को अपॉइंट किया था कि वो आके यहाँ पे उसका मॉनिटरिंग करेंगे। बट ड्यू टू कोविड एंड उसके बाद में तो अभी TPF उसमें काम कर रहे हैं कि जो हमको डिज़ाइन के बारे में और प्रोसेस मॉनिटरिंग वो सब TPF कर रहा है। चल रहा है, ये है 14 नंबर ऑफ सेगमेंट्स है, टोटल आउट ऑफ 53 सेगमेंट्स। Story by Kiran Borkar for Herald TV. A small group of priests are travelling to the capital of Christendom, Rome, to witness the elevation of Archbishop of Goa and Daman, Philip Neri Ferrao, as Cardinal on Saturday evening. It is after 465 years that Goa will get its first Cardinal. Philip Neri Ferrao is the 6th person of Goan origin to become a Cardinal. The church in Goa will celebrate Saturday evening when Philip Neri Ferrao will be elevated as Cardinal. The 69-year-old prelate has already travelled to Rome with his secretary, Father Loyola Pereira. The village of Aldana, from where Ferrao hails, too will be rejoicing. Archbishop of Hyderabad, Anthony Pula, was also among the 20 prelates who will be made cardinals in Rome this Saturday. Ferrao's entourage included 3 episcopal vicars of the archdiocese, parish priests, chaplains, and some former colleagues. After the elevation of Saint Joseph Vaz as saint, this is another big moment for the Goa Church. Monsignor Felipe Neri Antonio Sebastião da Rosario Ferrao, Arcivescovo de Goa e Dalmau, India. Bureau Report for Herald TV. Postmortem of BJP leader and actress Sonali Fogart was completed on Thursday afternoon. The reports will be available by Thursday evening. Though Goa Police had registered an unnatural death case, family members of Fogart have lodged a complaint at Anjana Police Station alleging that Sudhir Sagwan, the personal manager of the actor, and Sukhvinder, a friend of Sonali who accompanied her, were allegedly involved in the murder of the actor by giving slow poison. Chief Minister Pramod Sawant said that preliminary inquiry shows it is a case of cardiac arrest, but DGP will inquire into it. Sonali Fogart's brother, Rinku Daka, said, "My sister was fit and healthy. She cannot die of a heart attack. The color of her face and body have turned blue, which indicates poisoning." Meanwhile, Fogart's mother has called on the Goa government
and former Governor Satyapal Malik for help. हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और जिस बीजेपी पार्टी में मेरी बहन सोनाली फोगाट इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी और वरिष्ठ नेता भी थी और आदमपुर विधानसभा से उन्होंने चुनाव भी लड़ा और पार्टी के लिए बहुत कुछ अपना समय दिया, लगभग पार्टी के लिए बहुत समर्पित थी। और उस दौरान यहाँ गोवा में बीजेपी सरकार है तो यहाँ एमएलए और सांसद की तो छोड़िए, कोई एक बीजेपी का छोटा कार्यकर्ता भी हमारी मदद के लिए नहीं है। लेटर में भी आपने एक मेंशन किया था कि रेप का मामला है, क्या है ये कुछ समझ आना? ये सोनाली जी ने हमें उसी रात, जिस रात मर्डर हुआ है उससे पहले हमें बताया फ़ोन पे। मेरी माता जी से बात हुई, 2 बहनें उनसे बातचीत हुई और मेरे जीजा जी से, मेरे जीजा जी साथ में बैठे थे सिस्टर के, तो बातचीत हो रही तो वो घबराई हुई थी। तो उन्होंने जो पुरानी बातें हैं वो भी हमें बताई कि किस कारण मैं इतने दबाव में हूँ और क्यों डिप्रेशन में हूँ, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उस दौरान बताई, उसके बाद मुझे पता चला। पहले ऐसी कोई हमें जानकारी नहीं थी। अगर ऐसे पहले हमें कोई इस चीज़ का आभास भी होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। फिर आपको क्या लगता है रेप का भी घटना ऐसा रहेगा, ऐसा लग रहा है? ये तो देखो मेडिकल में पुष्टि हो जाएगी। फिर आपका क्या स्ट्रॉन्ग डिमांड है गवर्नमेंट को और इसका? स्ट्रॉन्ग डिमांड तो यही है जी, अगर इंसाफ मिले, सब कुछ फेयर हो तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कुछ लगता है नहीं कि यहाँ फेयर होगा। फिर आपको हमें ऐसा कुछ लगता नहीं है। इधर पोस्टमार्टम किया तो आप सेटिस्फाइड नहीं रह रहे हैं? नहीं, आगे हम रीपोस्टमार्टम कराएंगे। सर पुलिस का आपको सपोर्ट नहीं हुई? पुलिस का सपोर्ट कहाँ है? पुलिस का सपोर्ट होता तो हमारी एफआईआर दर्ज होती। एक छोटा सा केस होता है, लड़ाई झगड़े का केस होता है, उसमें पहले एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा सिस्टम नहीं है, ये अदर स्टेट है, आपका स्टेट नहीं है। जैसे हम यहाँ हमारे रूल हैं वैसे फॉलो करने पड़ेंगे। पहले मेडिकल होगा, उसके बाद में आपकी एफआईआर होगी, उसी बेस पे सीएम ने कल एक ओपिनियन देंगे कि क्या है, क्या मैटर है, किस कारण इनकी डेथ हुई है, उस बेस पे एफआईआर दर्ज। और कल एक सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो नेचुरल डेथ है और अटैक से मीन्स उनकी मौत हुई है करके। अगर वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, वो बोल रहे हैं कि केस चलेगा तो मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे चलेगा, तो वो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। वो अपने आप अपने बेस पे किस तरह कह सकते हैं कि ये नेचुरल डेथ है? उनको कैसे पता चल गया कि पोस्टमार्टम से पहले उनको कैसे पता चल गया कि एक नेचुरल डेथ है? और नेचुरल डेथ कैसे है? Clinton D'Souza for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant with other experts will address primary school in a virtual conference on September 19th from 10 a.m. to 12 p.m. The Chief Minister will provide information to students, teachers and parents on the new education policy and the Mulyavardhan project. Sawant also informed that Goa is the first state to carry out the Mulyavardhan in primary schools. Sawant clarified that the government will not shut schools but instead merge them. Chief Minister Pramod Sawant will hold a virtual conference to discuss the new education policy and the Mulyavardhan project on September 19. Sawant also informed that Goa is the first state to carry out the Mulyavardhan project in primary schools. Sawant clarified that the government will not shut schools but instead merge them. Mulyavardhan will also be implemented in class 5 and 8. Mulyavardhan 3.0 will be implemented as a platform integrated with the state curriculum. And Mulyavardhan 3.0 in Goa will be studied and evaluated as a capstone project by students and faculty at Evans School, University of Washington. Virtually I am addressing to all the primary school in the state of Goa. म्हणजे आम्ही हांगा पणजे हेडक्वार्टर्सांतल्यान सगळ्या शाळेत आम्ही डायरेक्टली ॲड्रेस करतले, जेणे करून मूल्यवर्धनात पुराय गोंयभर काम कितें केलां हे सगळ्या पेरेंट्स आनी व्हर्च्युअली ॲड्रेस करतना गोंयांतल्या प्रत्येक प्रायमरी शाळेत जे भुरगे, तांचे टिचर्स, PTA आनी त्या गांवांतलो पंच सरपंच हांच्यांनी तो कार्यक्रम अटेंड करचो, ज्या निमित्तान आमकां मूल्यवर्धनात आमी केदो मोठो बदल शिक्षणात हाडला हो सगळो तेंच्या पर्यंत पावतलो. 18 तारखेची मॉर्निंग सेशनान म्हणजे आमी सकाळी 10 ते 12 पर्यंत हो कार्यक्रम आसतलो, जेणे करून आमच्या एड्युकेशन सेक्टरांतले न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमी मॉडल म्हणून खंयसर इम्प्लिमेंट केला, एड्युकेशन सेक्टरांत आमी बेस्ट प्रॅक्टिसीस खंयच्या स्कुलांत राबयता, ह्यो सगळ्यो व्हर्च्युअली 1, 2 ते 2.5 वरांच्या कार्यक्रमाक
आणि ॲट अ टायम गोंयांतली सगळी स्कुलां आणि प्रायमरी स्कुल्स हे ह्या व्हर्च्युअली ह्या कार्यक्रमांतल्यान जॉईन जातले. त्या निमित्तांत आमी एड्युकेशन सेक्टरांत आणि विशेष करून प्रायमरी सेक्टरांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता आसतना आणि मूल्यवर्धनात कशा पद्दतीत वेगवेगळ्यो स्टेप्स घेतल्या हे सगळे पेरंट्स आणि टिचर्स ह्या सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून 18 सप्टेंबर ह्या दिसा व्हर्च्युअली 19 सप्टेंबर ह्या दिसा पर्सनली हांव एड्रेस करपाचो आसा. इव्हॅल्युएशन करपा खातीर जेन्ना वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटीक तांच्यांनी बरयलें, वॉशिंग्टन युनिव्हर्सिटी हॅज रेडी आणि तांच्यांनी तांकां लेटरूय धाडलें की वी आर रेडी टू डू द इव्हॅल्युएशन ऑफ युअर प्रोजेक्ट अँड दे आर स्टार्टींग द इव्हॅल्युएशन विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड मुक्ता फाउंडेशन्स. ते हाज्या फुडें म्हणजे अलॉंग विथ द कम्युनिकेशन दे आर ऑनलायन कम्युनिकेशन विथ द टीचर्स, पेरंट्स अँड द स्टुडंट्स. हाज्या करून ते इव्हॅल्युएशन रिपोर्ट्स हाज्या फुडें सबमीट करतले. इव्हॅल्युएशन रिपोर्टा खातीर सुद्दां गोंय राज्य सिलेक्ट जावप ही मोठी अभिमानाची गजाल आसा. Inculcate constitutional values in children, aligning with school curriculum and national policies for social emotional learning through a child-centric, joyful, constructivist, activity-based pedagogy with cooperative learning and classroom structures. प्रोग्रामचं जे conceptual framework आहे, ह्याचा जो एम आहे to enable schools to provide child-friendly, value-based education and environment to nurture caring, responsible and democratic citizens. हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. संपूर्ण देशामध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर एक पूर्ण राज्यामध्ये सर्व शाळांच्या मध्ये अशा प्रकारचा यशस्वी कार्यक्रम राबवून त्याचा एव्हिडन्स आलेला आहे. हा पहिलाच प्रयोग असेल असं मी ठामपणाने सांगू इच्छितो, कारण याच्यामध्ये आम्ही अनेक वर्षापासून रिसर्च करतो आहोत. प्रसाद कोची फॉर हेरल्ड टीव्ही. Rotaract Club of Panjim, in collaboration with Studio 07, conducted a Ganesha clay idol molding workshop at Mahalakshmi Temple on August 21st. Nearly 35 participants of different age groups from 12 to 32 participated in the workshop and used natural clay. A group of children performed a special Gumot Aarti. Rotaract Club of Panjim conducted a Ganesh clay idol molding workshop at Mahalakshmi Temple. The workshop was organized in collaboration with Studio 7. Nearly 35 participants of different age groups from 12 to 32 participated in the workshop. Sagun Gowdy for Herald TV. Goa Police registered a 2-0 win over Young Boys of Tonka to move ahead in the 18th edition of the Goa Police Football Cup, organized by Goa Police Sports Cell at Duler Ground, Mapsa on Wednesday. Goa Police registered a 2-0 win over Young Boys of Tonka. Both the teams started on a positive note with play shifting to both ends. Goa Police looked dangerous going forward and created few chances but couldn't gain an advantage on those chances. At the half-hour mark, Tushar Desai of Goa Police scored the opening goal with a brilliant strike, making it 1-0. Young Boys of Tonka created many chances but failed to capitalize on those chances. Goa Police made it 2-0 with Rajat Naik's powerful strike, leaving the Young Boys of Tonka's keeper flat-footed. After resuming play, Young Boys of Tonka made tactical changes but couldn't break down the Goa Police's strong defense.
Inasya Narona for Herald TV. Don Bosco Oratory prevailed over Parish Youth Nuwe via the tiebreaker 4-3 to enter the semi-finals of the Kavalosi Villagers UK Cup. Santa Cruz Club of Kavalosi organised the match, which was played at Father Rustin and Wellington Ground, Kavalosi. Don Bosco Oratory prevailed over Parish Youth Nuwe via the tiebreaker 4-3. A long pass by Don Bosco's Welton D'Souza to Alliston D'Souza was crossed to Sweeten Rivello. Sweeten Rivello took a shot which hit the crossbar and rolled out of the ground, which was blocked by Nue's keeper Macvino Galasso. In the second half, Parish Youth's Jason Dice passed the ball to skipper Jeros Oliveira but failed to score. Milroy shot in the open goal, only for Carol Suarez, the Don Bosco keeper, to fist the ball right onto the goal line. In the resultant tiebreaker, Maxwell Furtado, Welliston D'Souza, Walton D'Souza and Velito Miranda scored for Don Bosco. Nicholas Galasso, Jeros Oliveira and Myron Borges converted for Nue. Carol Suarez of Don Bosco saving the penalties from Jason and Milroy to put Don Bosco in the last 4 seconds. Inasya Narona for Herald TV. The shack licenses have been extended by 1 year by the State Cabinet on Wednesday. Chief Minister Pramod Sawant announced this after the Cabinet meeting. Tourism Minister Rohan Kaunte said that since the shack operators who were given licenses for 3 years had no business for 2 years of COVID and hence the extension of 1 year was given to them. They could begin operating right from September itself, he said. The shack licenses have been extended by 1 year by the Goa Cabinet. They can begin operations from September. Shack operators who were given licenses for 3 years had no business for 2 years of COVID. Hence, extension of 1 year was given to them. Normally, last 3 वर्षा the policy which was there for a period of 3 years, ते या वर्षा सोंपताले. 3 वर्षान 2 वर्सां कोविडाची गेली आणि 1 वर्स तांकां चलोवंक मेळ्ळें. सो खूब जाणांचे आशिल्ले, थोड्या आमदारांचे तशेंच लोकांची एक मागणी आशिल्ली which came up during assembly also की तांकां 2 वर्सां तरी एक्सटेंड करून दिवचें म्हणून. मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतकर on a compassionate way we have decided to give them an extension of 1 year. So same terms and conditions हाचेर आनी 1 वर्स तांकां एक्सटेंशन दिलें जाल्यार 3 वर्सांतली 2 वर्सां तांकां समज वेवसाय करूंक मेळूना, धंदो करूंक मेळूना, 1 वर्स करूंक मेळ्ळें जाल्यार आनी 1 वर्स करचें म्हणून की देर इज द कॉस्ट ऑफ शेक, बाकीचें काडप घालप, बाकीचे सगळे जे आसा वेवसाय ताजे कडेन तांकां मदत जातली म्हणून. द फी स्ट्रक्चर अदर थिंग्स हॅव बीन अलायन्ड एंड गिवन टू देम फॉर एक्सटेंशन ऑफ 1 year. सो सिजन सुरू जावच्या पयलीं आय थिंक वी वील बी रेडी टू कॅटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टुरिस्ट इन टर्म्स ऑफ शेक पॉलिसी. जी नॉर्मली अदरवायज डिले जाता म्हणून लोकांचो बोवाळ आसतालो. आज सेम टर्म्स एंड कंडिशन्साचेर इट हॅज बीन रिन्यूड एंड ऑन दॅट बेज ऑफ रिन्युअल थिंग्स वील गो आउट सो दॅट पीपल कॅन the same people can go for extended period of 1 year paying the new prescribed fees. ऑक्शन जर जातलें फुडल्या वर्सा करतले न्यू ऑक्शन फुडल्या वर्सांनी. ह्या वर्सांत आमी ताका 3 वर्सां आशिल्लीं, 3 वर्सां आमी समजून घेवपाक जाय. लोकांची कळ आमकां कळटा की सगळे खूब जाण रावल्या, नवे लॉट येतले, बाकीचे येतले, आमकां कळटा. पूण ज्यांनी घाले आनी इन्वेस्ट केले तांकां चलोवंक मेळूना न्ही. तांकां एक वाटेन 50% जरी बेनिफीट दिली, देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट इनवॉल्व. ताचे खातीर समज वी हॅव टू बी वी कॅनॉट टेक इट फॉर एडिशनल पिरियड ऑफ 2 years. पूण 1 वर्सान एक घेवची म्हणून ताजेर डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी 1 वर्साक एक्स्ट्रा जे एडिशन मेळटलें ऑन सेम टर्म्स एंड कंडिशन्स विथ अ रिवायज फी स्ट्रक्चर ते तांकां करूंक मेळटलें. सो स्टार्टींग ऑफ शेक्स in terms of this in September itself we can start giving them the permissions for the next year. So allotment bhi काय असते ना onu allotment bhi काय असते ना same terms and conditions acheruch this will be moved ahead. Clinton D'Souza for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant has one common answer to land grab investigation. Investigation is going on. He has, however, sure to hold a separate press conference on SIT investigations into the land grabbing cases that have surfaced. Asked why Bardez Mamledar has not been suspended and why he is not arrested in the land grabbing case when an FIR is filed against him, CM Pramod Sawant said investigation is going on.
When quizzed about involvement of politicians in land grabbing case, he also said investigation is going on. The CM has a common answer to land grab investigations. Investigation is going on. The CM will hold a separate press conference on SIT and land grabbing. When quizzed about involvement of politicians in land grabbing, he also said investigation is going on. In that land grabbing, Bangladesh Mamledar Akha Ekalla, and so far no action has been taken against him. Suspend Kurna. Investigation is going on. FIR is not being. Investigation is going on. So any update on SIT? The few names of politicians were coming. Yeah, some names of SIT चे तुमका डिटेल जे आपण की 2 दिवसाच्या मध्ये सेपरेट प्रेस कॉन्फरन्स होईल. Sagun Gaudi for Herald. With reports of illegal sand mining taking place at Girdoli, Team Herald and Herald TV took to the dirt roads to check on the illegality. It was found that at the police patrolling points there was no illegal sand mining, but in the interior there certainly were signs of illegal sand mining. The Girdoli Panchayat had written to the Directorate of Mines and Captain of Ports that heavy machinery was used late night and there was nexus between the sand mafia and the departments, causing widespread damage to ecology. The High Court of Bombay at Goa has directed the state authorities to look into statements by Goa River Sand Protectors Network that illegal sand mining was taking place in Girdoli, Shandor, Kurtori, among other places. The depth of the river Kushavati has increased by 10 feet, as also the width. The mangroves, coconut plantation and even houses of some people are also in danger. Sand mining चलता मोठा येते. Sand mining चलता ते आम्हीच पाडी हांव सारकें सांगून येना कितें sand mining ते ऑथॉरिटी सांगतले. पण हिंगा हें जाता डंप जाता आनी हिंगसा वत्ताय हें कट्टा. आतां ते हिंग काडटाय खंय काडटाय ते म्हाका खबर ना. तांकां सांगलें आतां एसे बायडल चेअरमॅन आयज देखून मुखाडे कोणें लेटर दिलें ना. आनी दिलें जाल्यार आमी एक्शन घेता आमी तांकां खबर आहा. आतां तेणें कंप्लेन करता सारकें सर्वे नंबर घालून कंप्लेन करपा जाय. कुर्तरे म्हणटाय ते ही कुट्टरे काडलो म्हाका दीस पडना ते म्हणटाय पाम घालून काडटाय हें काडटाय ते कोणें जाल्यार चोवपा जाय खंयसान काडटाय ते. आतां रिवर मुखार उरलो 150 मिटर भायर आहा रिवर ते नौकांत हें पडना ते सगळे मॅनग्रोव जाले. पयलीं थिंग शेत रोयताले तेका 2.5 शेतकार आहाय तितून आनी 300 शेतकार आहाय. आतां तें हें जालां पडना आहा तें तर सारकोन ते सगळे रोयताय मुखार सरताय जाल्यार तें बरें आहा. तेदो मागीर हें जावपा ना. बट लोकल्सांनी केन्ना ते न्ही लोकल तें सांग लोकल्स कोत्ताय न्ही कोत्ताय मागीर जाता कितें हिंगा आमी प्रोडक्ट कित्याक करताले लायव्हलीहूड आहा म्हणून तुमी हातीन बातीन काडटाय तशें सारकें डिस्ट्रॉय करून काडपा जायना. पूण तें कडेन हांव विचारलें जायत पळय ते कितें म्हणटाय आमी हिंगा डिस्ट्रॉय कोन्नाय हिंगा काडनाय म्हणटाय ते खंयसान हाडटाय दुसरे कडेन सांग. पूण दुसरे कडेन डिस्ट्रॉय पूण ते गांव आहाय तेणी करपा जाय खंय सारकें डिस्ट्रॉय जाता थिंगा. दुसरे तेणी बोट्यो घाताय ते तेंगे कॅप्टन पोर्ट्स आहा तेणी लायसन्स दिलाय म्हणटाय हे बोटींग एका वाड्या लायसन्स कोण दिता आमी दिनाय तेच दिताय ऑथॉरिटी आनी पे जायलो सगळे आमचे घालताय. Frankie, a local, said there is a nexus with locals, politicians and illegal sand miners. He also said he was offered money to keep his mouth shut. लोकल्स आमगे लोकल्स आहाय आनी पुलिसांकूय फोन म्हळ्यार म्हणटा पुलीस रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनाय आमगे रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही म्हणटाय. ही कोस्टल पुलिसागे कोस्टल पुलीस वो दुसऱ्या डिपार्टमेंट्स एंड जिओलॉजी तेंक कॉन्टेक्ट मार तेंक देखून थ्रू आ पंचायत हांवें एक लेटर केलोलें चीफ मिनिस्टरा सीसी कोन रेल्वेज आनी रेल्वे ब्रिजा पोंदा थिंग ते काटाय तेंक देखून हांवें सांगलोलें. पण तेणी कोणें एक्शन तेजे कोणाकले कांय एक्शन मागीर तेणी घेयल ना. तेका लागून म्हाका दिसता जायते नॅक्सस आहा पॉलिटिशियनूय तेंक प्रोटेक्ट कोत्ताय जायते कडेन. आतां कुडतोरी देखून तो एकलो पॉलिटिशियन ताका पयलीं एकलो पॉलिटिशियन म्हणजे तेंकां बॅकअप आसता. तेका लागून एक पाटू हेल्पलेस जाता. मॅंग्रुव्स आहाय ते उंटायत रावताय ते दिसान दिसा मॅंग्रुव्स क्लियर कोत्ताय मागीर मेशिनरी सेटअप करपा जाय म्हूण तेका लागून ते मॅंग्रुव्स बी काबार केलो आहा तेणी जायते. आनी सगळे एक माड तुमी चोयलो जाल्यार तो वयर सुके जमनीच्या आसपास जाल्लो आतां 3-4 मिटर उदकां भितर आहाय माड. सो परिस्थिती जालो आमगे गिर्दोली चांदोर कुर्तोरी आनी सरावंडींग एरियाज पंचवाडी चिरोडा. एक म्हणतो इशू म्हणतो हेजो सँड मायनींग तेजी एक्शन घेवपा जाय. कोण सँड काडाय ते सगळे मी काबार केलो आहाय सो दुवान गेलो आहाय तेजी एक्शन घेवपा जाय. तो सगळे ते न्हंय बांद बी सो दुवान गेलो आहाय ते माड बी सगळे गेलो आहाय
तेचे अजून तांणी कितें एक्शन घेतलेलें तेजे आज चोया मुखार कितें ते ऑलरेडी कोर्टान कोर्टान डिसायड ते आमी कोर्टाचेर चुपा पडलें. पण पंचायत लेवलाचेर तुमी कितें आनी इशू घेतले ते आतां आमी न्यू येयले न्ही आज चुपा उलोवपा आदी घेतलेले ते पयले घेतले जाय गेल्ले. Clinton D'Souza and Marcus Gonçalves for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.